Today we'll be going through some PYQs of Indian Polity. आज का मेन टॉपिक है फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। Which of the following features was borrowed by the Constitution of India from the British Constitution? As we know, Indian Constitution ने बहुत सारे sources लिए थे from other countries, US, France, Britain. अब इससे पहले when India was a colonial state under the British rule, British had passed many acts of 1935, Act of 1947 से पहले, so बहुत सारे पहले एक्ट से भी इंडिया ने फीचर्स लिए हैं। मोस्ट प्रोमिनेंटली इट वाज टेकन फ्रॉम 1935 एज वेल। अब हमें जानना है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से फीचर्स है जो इंडिया ने लिए। रूल ऑफ लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। लॉ मेकिंग प्रोसीजर हैज आल्सो बीन टेकन। पार्लियामेंट्री सिस्टम, हमें पता है कि इंडियन डेमोक्रेसी इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। यूएस इज अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म। पार्लियामेंट्री हैज बीन टेकन एन एग्जांपल फ्रॉम ब्रिटिश। करेक्ट ऑप्शन 1, 2 और 4 है। Why is the correct option not 3? Independence of judiciary British Constitution का feature नहीं है. It's a feature of the United States. So the correct option here will be option number 1, 2 and 4. Going into the next question. Which one of the following schedules of the Constitution of India has fixed the number of members of Rajya Sabha to be elected from each state? ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यू हैव टू नो द बेसिक्स। हर एक स्केड्यूल किस चीज में फोकस करता है। फर्स्ट स्केड्यूल फोकसेस ऑन इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। अभी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ स्केड्यूल। फोर्थ स्केड्यूल फोकसेस ऑन election, how the members of Rajya Sabha is elected. But while you're solving this, while you're going through PYQs, go through the other schedules as well. फिफ्थ और सिक्स सबसे इजी है याद करने के लिए। फिफ्थ स्केड्यूल फोकसेस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज इन स्केड्यूल ट्राइब्स। ये सिक्स स्केड्यूल इसके बाद आया था। ये भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्केड्यूल एरियाज ट्राइब्स है फॉर 4 स्पेसिफिक स्टेट्स विच आर असम, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। इन चारों को छोड़ के ऑल अदर स्केड्यूल एरियाज ट्राइब्स is dealt by the fifth schedule. Likewise, third schedule is focusing on oath and affirmation of officials. जब officials किसी let's say government institution में they get selected, say in the any officials of the governments, उनका क्या oath है, affirmation देना है, third schedule focuses on this. So the correct option is option 4. Now going into the next question. Which of the following statement is or are correct? Directive principle of state policy are meant for promoting social and economic democracy in India. We all know directive principles are some directions given by the state that is done ताकि now these are non-binding, these are done ताकि state का economy बढ़ सके, social development बढ़ सके. Now the fundamental rights are enshrined in part 3 of the Constitution of India are ordinarily subject to reasonable restriction. Fundamental rights, ये इसमें भी कुछ question कुछ restrictions आते हैं. Nobody can exercise fundamental rights completely. There are certain restrictions. This is also correct. This is a very basic fact. Directive principles states promote social and economic democracy. अब इसमें आप एलिमिनेशन डायरेक्टली यूज कर सकते हो। सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। जहां पे भी एक्सट्रीम है यू कैन जस्ट फिश इट आउट। एनी कंट्री तो नहीं हो सकता। एवरी कंट्री डज नॉट हैव सेक्युलरिज्म। सम कंट्रीज हैव वन रिलीजन एज एन ऑफिशियल रिलीजन। सो ऑप्शन नंबर 3 गेट्स रॉन्ग। सो द करेक्ट ऑप्शन, as you know, 1 and 2 is all correct. Many people confuse कि fundamental rights is completely free, कोई भी ये use कर सकता है without any restrictions, लेकिन वो नहीं है. So the correct option is option 1 and 2. Going into the next question. Which of the following schedules of the Constitution of India
provides for setting up of autonomous district council. अभी autonomous district councils क्या है? States के अंदर जो tribes है और scheduled tribes, scheduled areas, they are given relatively a bit more freedom in exercising their local customs, practices, etc. इस function के लिए they can set up autonomous district councils. ये अभी आता है 6th schedule of the constitution for those 4 states. Now going ahead, we all know this will be related to this is related to scheduled areas and scheduled tribes. या तो obviously it will be 6th schedule, नहीं तो 5th. इसमें आपको और डिटेल में जानना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक है 6th schedule के लिए. Now going ahead, as I said, if you know the schedules, आपके ऐसे बहुत questions आप clear हो सकते हो. Now the first schedule, हमें यहाँ पे कौन से pairs correctly match है हमें वो बताना पड़ेगा. The first one, first schedule, forms of oath or affirmation. That is wrong. First schedule is directly dealing with union territories and states. How do we remember this? First schedule. जब आप directly after forming a constitution, forming a government, what do you focus on? You focus on forming states. अब ये देखोगे कौन सा state अभी बन रहा है, कौन सा which region wants to form their own state. So the first schedule deals with the most important matter. अभी third schedule, allocation of seats in the council of states. ये भी गलत है, as I said before. Third schedule focused on oaths and affirmations. Now fifth schedule, provision related to administration of schedule areas in tribe. This is correct. अगर यहाँ पे Assam mention होता, then it would have been wrong because Assam comes under the 6th schedule. So this is currently completely correct. 9th schedule, provision related to administration of tribal areas in certain states. We all know ये गलत है. This is for the 6th schedule. 9th schedule, actions बता रहा है. In case you violate, तब आपके कौन से actions लिए जाएंगे? That is focused in 9th schedule. So 9th schedule भी ये गलत match है. Correct is 3. अभी many people think option third is correct. वो लोग third option करेंगे. That's wrong. यहाँ पे question लिखा है how many of the pairs is correctly matched? Correctly matched 8 है. So the correct option will be option A. Going ahead. Now this is not something that you memorize. आपका खुद का interpretation कैसा है वो focus करता है. Which one among the following is not a character of secular state? यहाँ पे we all know secular state क्या है? A state does not have any official religion. It refuses theocracy. Theocracy का मतलब होता है there is a religious head. So refuses नहीं है. So this is also a character. Second, it separates religion from the state. Religion and state अलग-अलग है. So this is also correct. A state in order to be secular must be democratic. Now, and it must prevent religious conflict and promote religious harmony. We all know secular states का main motive है कि अलग-अलग religions के साथ fight नहीं हो. So ये भी correct है. The A, B, C all are correct. Now इस option में we have to find which is not. A state in order to be secular must be democratic. ये necessary नहीं है कि बस democratic states ही secular है. कभी कभार a state may not be democratic also, लेकिन वो secular हो सकता है. The leader may decide not to promote any religion as its official religion. इसमें आप bias नहीं कर सकते. So main character नहीं है. A country may be democratic, may not be democratic. It can still be secular in its nature. So यहाँ पे the correct option is option number C. This is not a character of a secular state. Going ahead, which of the following is not a central tenet of Constitution of India? अब Constitution of India के features जानने पड़ेंगे. ऐसा question आएगा, कौन सा main feature नहीं है? मतलब which is not a central tenet. Central tenet means this constitutes the core of the features, main features which defines our constitution. कौन से है?
पहले आप वो आइडेंटिफाई कीजिए, फिर आपको पता चलेगा। वी ऑल नो इट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। इसमें आपको बेसिक आर्टिकल्स जानना पड़ेगा। आर्टिकल 15 अभी वी ऑल नो, in case you don't know articles also, article 25 provides freedom to profess any religion, ensures equality of all citizens within religious communities. इसमें अगर आपका मेमोरी स्ट्रांग नहीं है कौन सा आर्टिकल क्या है, if you know the basic that India is a secular state, ये हमारे प्रीएम्बल में है। सेक्युलर वर्ड, सेक्युलर का मतलब it does not give official status to any religion, तो आपको पता है ये गलत होगा। So which is not a central tenet, it will be option number 2 only. Now going ahead, the Constitution of India guarantees freedom of thought and expression to all its citizens subject to these. इसका पूरा क्वेश्चन कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसी को भी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन दे सकता है। यू आर फ्री टू थिंक वॉट एवर यू वांट, यू आर फ्री टू एक्सप्रेस वॉट एवर यू विश टू से, लेकिन उसमें भी सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस है। अब कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शंस है इन चीजों में, राइट टू इक्वालिटी कैन नॉट बी एक्सरसाइज अगर किसी का फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन हैम्पर हो रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजन कैन एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, लेकिन सिटीजन्स को कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कम्स अंडर आर्टिकल 31(6), लेकिन सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स cannot be implemented if it hampers freedom of thought and expression. All of these are correct. In case you don't remember the articles, you have to at least understand all of these are a part. Freedom of thought and expression constitution देता है, but at the same time you have to make sure you follow certain rules under all these articles as well. So the correct option is option D. Going ahead, which of the following does not form part of Immanuel Kant's theory of perpetual peace? This is not a directive principle. इसमें हमारा फीचर निकल जाता है। Immanuel Kant focused on preventing wars between nations. अब wars between nation कैसे होते हैं, उनका फोकस था इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए। He focused on using institutions, governments to prevent war. अभी इंस्टीट्यूशंस में आ जाते हैं रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, दिस इज अ फीचर ऑफ सर्टेन डेमोक्रेटिक कंट्रीज। उसके बाद फेडरल कॉन्ट्रैक्ट अमंग स्टेट्स, दिस इज ऑल फॉर्मल। इमैनुअल कांट का मेन फोकस ये था, फेडरल कॉन्ट्रैक्ट अमंग स्टेट्स। इमैनुअल कांट डिड नॉट बिलीव इन वर्ल्ड गवर्नमेंट, this was specific, he did not believe कोई एक गवर्नमेंट ऊपर में रहे, because this may also cause wars. So although this is he did not believe in it, इसका mention किया जाता है। अभी which does not form transformation of individual consciousness, everything that Immanuel Kant believed focused on using formal institutions, government, etc. to prevent war. This is a very personal individual action, individual consciousness. ये Immanuel Kant में नहीं आता, this is a polity and international relations subject. So the correct option is option D. That's it for today. When you're studying, you have to know the schedules, basic articles, basic features, and when you're going to PYQs, you have to make sure apart from the correct option, आपको गलत options भी देखने पड़ेंगे. That's it. Thank you everyone.